હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। 5 દિવસ ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ઉત્તર મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ત્યારે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 48 કલાક અતિ ભારે રહેવાના છે। વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। હાલમાં 3 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે કે જેના કારણે આ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને આગામી 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। 44 થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાનું છે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના व्यक्त कराई છે। जो 6 दिन में गुजरात रीजन में हैवी बारिश होने की संभावना है और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 2 दिन तक हैवी रेन होने की संभावना है। जो ऑरेंज अलर्ट है हमने आज सौराष्ट्र कच्छ में और गुजरात रीजन में दोनों में रखा है। तो आज एक्सपेक्टेड है कि आइसोलेटेड वेरी हैवी रेन भी आने की उम्मीद है दोनों सब डिवीजन में, जिसमें कि जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो साउथ गुजरात जिसमें नवसारी, वलसाड, दादर नगर हवेली, दमन और सूरत, तापी इत्यादि है। इधर अमरेली, भावनगर सौराष्ट्र में है और थोड़ा नॉर्थ गुजरात में भी थोड़ा भारी वर्षा आने की संभावना है। इसमें साबरकांठा, बांसवाड़ा और इधर सौराष्ट्र कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आने की संभावना है। और जहाँ तक थंडरस्टॉर्म की बात है तो अगले 5 दिन तक थंडरस्टॉर्म की संभावना है, जिसमें लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म को 10 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहने की संभावना है।